गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स। स्टूडेंट्स, जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो या तो वेबसाइट ओपन होती है या फिर कुछ एरर्स वगैरह आती है उसके अंदर, तो रेस्पॉन्स आता है। या तो आपने जिस पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजी है वो पेज डिस्प्ले हो जाएगा या फिर कोई ना कोई एरर डिस्प्ले होगी। तो ये सारा मैनेज होता है HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स के द्वारा। तो HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स जो इंटरफेस है उसके अंदर कुछ मेथड्स हैं इनबिल्ट, वो रेस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे SC मल्टीपल चॉइस, ये क्या रिटर्न करेगा? स्टैटिक रहेगा ये, और ये फाइनल रहेगा। यहाँ पर जितने मेथड्स है वो सब क्या है? स्टैटिक है। इसका स्टेटस कोड रहेगा 300 इंडिकेटिंग दैट द रिक्वेस्टेड रिसोर्स करस्पॉन्ड्स टू एनी वन ऑफ अ सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ईच विथ इट्स ओन स्पेसिफिक लोकेशन। फिर है SC मूव्ड परमानेंटली, स्टेटस कोड रहेगा 301 इंडिकेटिंग दैट द रिसोर्स हैज परमानेंटली मूव टू ए न्यू लोकेशन एंड दैट फ्यूचर रेफरेंस शुड यूज ए न्यू URI विद देयर रिक्वेस्ट। तो ये हमने देखे हैं कई बार 301 नाम से। SC मूव्ड टेम्परेली, स्टेटस कोड रहेगा 302 इंडिकेटिंग दैट द रिसोर्स हैज टेम्परेली मूव्ड टू अनदर लोकेशन बट दैट फ्यूचर रेफरेंस शुड स्टिल यूज द ओरिजिनल URI टू एक्सेस द रिसोर्स। The definition is being retained for backward compatibility. SC found is now the preferred definition. SC found, status code 302 indicating that the resource reside temporarily under a different URI. Since the redirection might be altered on occasion, the client should continue to use the request URI for future request. To represent the status code 302, it is recommended to use this variable. SCC other, status code 303 indicating that the response to the request can be found under a different URI. SC not modified, status 304 indicating that the conditional get operation found the resource was available and not modified. SC use proxy, status code 305 indicating that the requested resource must be accessed through the proxy given by the location field. SC temporary redirect, status code 307 indicating that the requested resource resides temporarily under a different URI. The temporary URI should be given by the location field in the response. SC bed request, SC precondition failed, status code 412 indicating that the precondition given in one or more of the request header field evaluated false when it was tested on the server. SC request entity too large, status code 413 indicating that the server is refusing to process the request because the request entity is larger than the server is willing or able to process. SC request URI too long, status code 414 indicating that the server is refusing to service the request because the request URI is longer than the server is willing to interpret. SC unsupported media type, status code 415 indicating that the server is refusing to service the request because the entity of the request is in a format not supported by the requested resource for the requested method. SC requested range not satisfiable, SC expectation failed, status code 417 indicating that the server could not meet the expectation given in the expect request header. SC internal server error 500 indicating an error inside the HTTP server which prevented it from fulfilling the request. SC not implemented 501 indicating the HTTP server does not support the functionality needed to fulfill the request. SC bad gateway 502 indicating that the HTTP server received an invalid response from a server it consulted when acting as a proxy or gateway. SC service unavailable,
कोड रहेगा 503, इंडिकेट करेगा दैट द HTTP सर्वर इज टेम्परली ओवरलोडेड एंड अनेबल टू हैंडल द रिक्वेस्ट। जब HTTP सर्वर वो टेम्परली ओवरलोडेड रहेगा और हैंडल नहीं कर सकता रिक्वेस्ट को, उस केस में एरर कोड आएगा 503 और इसके लिए हम यूज करेंगे SC सर्विस अनअवेलेबल। SC गेटवे टाइम आउट, एरर कोड स्टेटस कोड रहेगा 504, indicating that the server did not receive a timely response from the upstream server while acting as a gateway or proxy. SC HTTP version not supported, status code 505, indicating that the server does not support or refuse to support the HTTP protocol version that was used in the request. Add cookie, add the specified cookie to the response. This method can be called multiple times to set more than one cookie. Contain header, name the header name, return true if the name response header has already been set, false otherwise. Encode URL, encodes the specified URL by including session ID in it. Encode redirect URL, encode the specified URL for use in the send redirect method. Encode URI, URL, the URL to be encoded. Send error, send an error response to the client using the specified status and clear the buffer. Send redirect, sends a temporary redirect response to the client using the specified redirect location URL and clear the buffer. Set data header, sets a response header with the given name and date value. Add header, add date header, adds a response header with the given name and date value. Set header, sets a response header with the given name and value. Add header, adds a response header with the given name and value. Set int header, sets a response header with the given name and integer value. Add int header, adds a response header with the given name and integer value. Set status, sets the status code for this response. Set status, get status, the current status code of this response. Get header, gets the value of the response header with the given name. Get headers, get the value of the response header with the given name. Get header names. तो ये कुछ इनबिल्ट मेथड्स थे HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स इंटरफेस के।